Ladies and gentlemen, the hashtag is Aapda Attack. You agree with this description of the Aam Aadmi Party as Aapda? Aapda would translate loosely into what? Pankaj, you are the best in Hindi out here. Aapda they would translate into crisis? Disaster? Disaster? Interesting turn of phrase here, Ishkaran, where you're punning on Aap to call it Aapda, and Aapda in Hindi means disaster. Arnab, popular slogans always help, and they are trying to popularize the slogan. But by doing so, you're also making the Aap into your principal, your principal battle. That's factually true, because they are the party in power. They have to be the principal opposition. You have to take your case to the public against the party in power, so that you can't deny. But then, Shehzad, this way the Prime Minister becomes the main campaigner and main face. Why did you not have a chief ministerial face in Delhi at all? Are there no people worthy of being chief ministerial face in Delhi? Or would any new chief ministerial face not be able to take on Arvind Kejriwal? Arnab, you are a journalist who has covered politics for so many years. In Odisha, did we have a chief ministerial face declared? Did we have, before 2014 in Haryana, chief ministerial face declared? The states where we are not in power, we never declare the CM face. Arnab, you know BJP better than most people. You have covered BJP. Your channel covers both parties very extensively. So this is always our principle, that once the elections are fought, the elected MLAs will come and they will form the government and they will elect the chief minister. But thank you for your confidence that we are forming the next government. Therefore, you want to know our chief minister. But having said that, Mr. Arnab Goswami, today, Prime Minister in the entire speech has not said who is Aapda. पर जो आपदा है वो समझ गए कि हम हैं आपदा, और चीख चीख कर बोल रहे हम ही हैं आपदा. We are the Aapda. No, you are not the Aapda. We are the Aapda. And I have got this today. Arnab, you know why I have got this? What is this now? This is called binocular. Priyanka, please have a look. It is called binocular. मैं binocular. Priyanka? I am trying to see ये लटकते हुई तार मुक्त दिल्ली कहाँ है? ये pollution मुक्त दिल्ली कहाँ है? ये यमुना साफ क्यों नहीं हुई? ये 24 घंटे साफ पानी क्यों नहीं आया? वाटर लॉगिंग मुक्त दिल्ली कहाँ है? 500 नए स्कूल कहाँ हैं? 20 नई यूनिवर्सिटी कहाँ हैं? 24 नए हॉस्पिटल कहाँ हैं? 1000 रुपए महिलाओं को पंजाब में कहाँ दिए? पर हाँ, मुझे दिख रहा है मोदी जी ने 60,000 करोड़ रुपए हाईवे के लिए दिए. मुझे दिख रहा है कि मेट्रो के 4th फेज के लिए मोदी जी ने 13,000 करोड़ दिए. मोदी जी ने आज 1600 घर गरीबों को दिए और ये शीश महल बनाने रहते. एंड यू नो अर्नब, आई कैन सी इन माई बाइनोकुलर्स दैट दे हैव a Toto toilet in the Sheesh Mahal, 4 lakh rupee toilet. Oh, I can see 8 lakh rupee parda. Oh, I can see the curtains, and then after that the flooring is worth 1 crore rupees. Oh, now I can see 63 lakh rupee. The kitchen has been built. Oh, I can also see the kind of massage chair that is for 4 lakh rupees. I can see LED TV for 64 lakh rupees. Arnab, क्या क्या देखा है दिल्ली वासियों ने? और प्रियंका जी बताइए, 500 नए स्कूल के नाम बता दीजिए आज. प्रियंका जी 20 नई यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए आज. प्रियंका जी 24 नए हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए. आप इतना काम किया है, केजरीवाल ने इतना काम किया है. पोल्यूशन मुक्त बना दी क्या दिल्ली को? यमुना में डुबकी लगाने वाले थे 2025 में, कर दिया क्या साफ यमुना जी को? एक बार आज अर्नब जी, डोंट लेट देम एस्केप, डोंट लेट देम हाइड, डोंट लेट देम गिव एक्सक्यूजेस. इन्होंने बता दिया कि यही है आपदा. आपदा से दिल्ली को बचाना है, भाजपा को लाना है, दिल्ली को बचाना है. This is what Prime Minister said. You see this, before we go into details, because Priyanka, Shehzad spent a lot of time looking. Shehzad, can you stop doing that? It's really funny. You just stop doing that. Don't do that. This is now, put it down, man, put it down. You got everyone's attention. You see, he wants this real moment. Now, you see, the thing is, this 63 lakh rupee toilet, 64 lakh rupee LED, in retrospect, I'm sure you will agree that this, the 100 crore house that was built for Arvind Kejriwal was wholly unnecessary. And whether unnecessary or not, he may feel it was necessary and it helped him become more productive. But, it becomes a political liability. And it cuts into this whole image that Arvind Kejriwal had of a middle-class leader, very, very luxurious lifestyle that he has enjoyed. It's going to come and hurt him. And that really has clicked. People are talking about that the most, because even if you say there's corruption, Liquorgate, I don't know, Manish Sisodia knows, somebody else knows, the matter is under investigation, I'm not convicted yet, etc., etc. But you lived in that house.
You lived in that house, and that leads to the loss of imagery. I can start now. Yes. A very happy new year to you, Arnab ji, and all the Yes, fellow to panelists you as well. and the viewers. Echo. Firstly, to begin with, not at all. We are not at all overconfident. In fact, because you started that in your opening statement, Aam Aadmi Party is not at all overconfident. We just have confidence on the work that we did in the past 10 years. Today also, I'm assuming, I can't see it, but I'm assuming that the BJP spokesperson is sitting with a binocular in his hand. Yes. So I would just say थोड़ा और zoom in करके देखिए, आपको सोने की लंका भी दिखेगी जो मोदी जी ने 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा में 500 करोड़ का घर बनवाया है अपने लिए, उसमें टनल भी बनवाया है जिससे वो पार्लियामेंट में जाए, उसको और जूम इन करके देखिए तो आपको शायद दिख जाएगा कि टॉयलेट कितने की एटसेट्रा एटसेट्रा कितने की है, क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री जी का घर था वो छोड़ चुके हैं, वहाँ वो रहते नहीं हैं। तो अगर आपको वहाँ पे बिना पर्दे बिना टॉयलेट सब कुछ दिख रहा है तो आई एम श्योर जहां मोदी जी अभी रहते हैं सोने की लंका में वो भी डेफिनेटली दिखेगा। आपको ये सब बातें उठाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप नहीं बता सकते। आज मोदी जी ने 10 सालों में एक शिलान्यास कर दिया, उस पर ये लोग उड़ रहे हैं, बताओ। दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। वी आर कॉन्फिडेंट बिकॉज इन दिल्ली अंटिल 2014 देयर वर ओनली 22,000 classrooms, only 22,000 classrooms in the past 75 years. In the past 10 years, we made 25,000 more classrooms. We made 3 universities. We made 6 university campuses. We made 11 vocational colleges, of the list of which I have, and I can read it out. I was in a debate previously with Shehzad ji, and I read it out there, but he starts screaming when I do that. When it comes to the hospital, or say the not applying the Ayushman Bharat Yojana in Delhi, well, you know, we don't have a problem. We'll apply anything that is good from Madhya Pradesh, anything that is good from Kerala, anything that is good from West Bengal. We don't have a problem with it. But fortunately, the Delhi government, being an ईमानदार government, we don't have any exclusionary policy कि तुम्हारे पास फ्रिज है, एसी है, कार है तो हम तुम्हें एक्सक्लूड करते हैं अपनी आयुष्मान भारत से। आपके पास रोल्स रॉयस भी अर्नब जी, तो आप आ जाइए, हम आपका इलाज मुफ्त में कराएंगे। होप गॉड फॉरबिडिंग यू एवर नीड इट। देन अगेन, आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि हमारे अस्पतालों में दवाइयां सस्ती मिलेंगी। भाई हमारी फ्री में मिलती हैं तो हमारी स्कीम बेहतर हुई ना। इनके आयुष्मान भारत में 7200 करोड़ पूरे देश में खर्चा होता है, हमारी हेल्थ स्कीम के अंडर 9,000 करोड़ दिल्ली में होता है, तो हमारी बेहतर होगी ना। और अगर स्कूलों से सडनली इतना प्यार जाग गया, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, जाग गया है, दिस नैरेटिव हैज टू बी कंप्लीटली क्रेडिटेड टू अरविंद केजरीवाल। अगर जाग गया है, उत्तर प्रदेश में कल की रिपोर्ट है 40 लाख स्टूडेंट्स हैव ड्रॉप्ड आउट। Please, that is not how you're going to make the future of the country, by having an unpad jamaat. You'll have to educate people. It is important. असली डिग्री, असली स्कूल शिक्षा, गुड शिक्षा प्रणाली is important. तो प्लीज उसको ठीक करा लीजिए। दिल्ली के बारे कुछ मत बोलिए। But one question, देश की राजधानी, you have both made your opening remarks. मैं एक question पूछना चाहता हूँ। I have one question. One minute. I have one question to you. Arnab is asking, okay. Yes, Arnab can be asking. Not BJP spoke, yeah. Now, what is this binocular thing? I don't need to ask, I am finding. ये स्कूल कहाँ है, ये यूनिवर्सिटी किधर है भाई, ये वेयर इज दिस न्यू हॉस्पिटल वेयर यू आर गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट। अरे ये नए हॉस्पिटल किधर है, ये यमुना जी साफ हो गई क्या, मैं देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा। ओ बाइनोक्यूलर लगा के दिल्ली की सड़कों पे उतरो, दिख जाएंगे। यू ओनली आस्क हर, आई विल सी इन द बाइनोक्यूलर। दिल्ली भी दर्शन आप एक काम करो, सुबह 10 बजे मुझे मिलो, आपके एक और प्रवक्ता हैं। Arnab, I thought you had to question me. He is very यमुना जी is with 4 गंगा 8,000 नमामि गंगे में 20,000 करोड़ खर्च कर दिया 10 साल में। नमामि गंगे में कह रहा है कि पैसे बांटने की मशीन है नमामि गंगे। यमुना has decreased. So